The human heart. Introduction. The heart is an essential organ in the human body responsible for pumping blood and maintaining circulation. Understanding its structure and function is critical for learning how the circulatory system supports life. Basic anatomy of the heart. Size. The heart is a muscular organ about the size of a fist. Weight is 250 grams in females and 300 grams in male. Location. It is located slightly to the left of the chest in the thoracic cavity, between the lungs and behind the sternum. The rib cage protects the heart from injury. This is first is superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus, right atrium, right ventricle, and tricuspid wall, aorta. Superior vena cava and inferior vena cava both are veins, and IVC is a big vein. And circulatory system you can see superior vena cava, inferior vena cava, and coronary sinus takes blood from right atrium, tricuspid wall, right ventricle, and then papillary muscles whole. एंड ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी वॉल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर वो लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाता है, फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम, bicuspid wall also known as mitral wall, and left ventricle, then papillary muscles whole. Blood goes up to the ascending aorta, arch of aorta, descending aorta, thoracic aorta, abdominal aorta, and whole body. This is circulation. The walls of the heart. The heart wall is composed of three layers: epicardium, myocardium, and endocardium. Epicardium is the outer protective layer. Myocardium, the muscular middle layer responsible for contraction. Endocardium, the inner lining that contacts the blood. The septum. The septum is a muscular wall that divides the heart into left and right sides, preventing the mixing of oxygen-rich and oxygen-pure blood. Structure of the heart. The heart is divided into four chambers. Right atrium receives oxygen-pure blood from the body. Right ventricle pumps oxygen-pure blood to the lungs. Left atrium receives oxygen-rich blood from the lungs. Left ventricle pumps oxygen-rich blood to the rest of the body. Left atrium collects oxygen-rich blood from the lungs through the pulmonary veins. It transfers this blood to the left ventricle for systematic circulation and acts as a reservoir, preparing oxygenated blood for distribution throughout the body. Left ventricle pumps oxygen-rich blood to the body via the aorta as the strongest chamber. It generates high pressure to counter systematic resistance. This ensures that tissues and organs receive the necessary oxygenated blood for optimal functioning. Right atrium receives deoxygenated blood from the body. Through the superior and inferior vena cava, it collects this blood from systematic circulation and transfers it to the right ventricle, playing a crucial role in the process of pulmonary circulation. Right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs through the pulmonary arteries. This chamber is responsible for delivering blood to the lungs for oxygenation, allowing carbon dioxide to be expelled and oxygen to be absorbed before the blood returns to the left side of the heart for systematic circulation. Wall of the heart. Atrioventricular wall. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, दो एट्रियम वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्स होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल. तो ये कौन सा है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, माइटल वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल. ये सेमिलुनर वॉल, पल्मोनरी वॉल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, aortic wall between the left ventricle and aorta. Functions: valve ensure one-way blood flow, preventing backflow.
एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, mitral वॉल एंड सेमिलुनर वॉल, 2 वॉल होते हैं जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल एंड आयोटिक वॉल। जो बैक फ्लो है उसे प्रिवेंट करता है। एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल इज अ ट्राइकस्पिड वॉल। द ट्राइकस्पिड वॉल इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 फ्लैप्स। इसमें 3 कस्प होते हैं, एंटीरियर कस्प, पोस्टीरियर कस्प एंड सेप्टल कस्प। During systole, heart contraction, the wall closed to prevent blood from flowing backward into the right atrium, ensuring one-way blood flow. जब contractions होता है, that is normal heart sound S1 and S2, लब डब साउंड। जब लब साउंड होता है S1 तो हार्ट कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो जो आपका माइट्रल वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं। माइट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल में 2 लिफलेट होते हैं, एंटीरियर लिफलेट एंड पोस्टीरियर लिफलेट, और कोडेड टेंडिनेस होते हैं और पेपिलरी मसल से अटैच होती है। इट क्लोज, जैसे वो क्लोज होता है तो जो आपका ब्रेक फ्लो है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम रिगर्जिटेशन बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, मेंटेनिंग एफिशिएंट सर्कुलेशन। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रेक्शन होता है, S1 साउंड क्रिएट होता है, तब आपका माइट्रल वॉल क्लोज होना चाहिए। एंड सेमिलुनर वॉल, दैट इज फर्स्ट इज 2 सेमिलुनर वॉल होते हैं, एक पल्मोनरी वॉल होता है, सेकेंड वन इज आयोटिक वॉल। पल्मोनरी वॉल लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होता है। इज कंपोज्ड ऑफ 3 crescent shaped cusp. It opens during systole to allow oxygen pure blood to flow to the lungs for oxygenation, and closes during diastole to prevent backflow into the right ventricle. This ensures efficient one-way blood flow toward the lungs, preventing regurgitation and maintaining proper ऑक्सीजनेशन। जब आपका S2 साउंड क्रिएट होता है, जैसे डब साउंड, तो आपका जो पल्मोनरी वॉल होता है वो क्लोज होता है एंड आयोटिक वॉल भी क्लोज होता है। द आयोटिक वॉल पोजिशन बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आयोटा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 सेमिलुनर कस्प डिजाइन टू विथस्टैंड हाई प्रेशर्स। इनके 3 कस्प होते हैं, राइट कोरोनरी कस्प, लेफ्ट कोरोनरी कस्प एंड थर्ड इज नॉन कोरोनरी कस्प। जो राइट कोरोनरी कस्प होती है उसमें से राइट कोरोनरी आर्टरीज अराइज होती है, और जो लेफ्ट कोरोनरी कस्प होते हैं उसमें से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज करते हैं। नॉन कोरोनरी कस्प में से कोई भी आर्टरी अराइज नहीं होती है।